A very good morning to all of you guys. Can all of you see the screen properly and can all of you hear my voice clearly? Just give me a big hi in the chat box and great to be here. So, first of all, I would like to ask you, how are you all? Are you all okay? Are you all good? Yes, just give me a big hi in the chat box. Yes, welcome, and welcome to the live analysis session on the YouTube. And thank you so very much for joining in. So, for next half an hour, yes, for next half an hour, we are going to have a dedicated session on the analysis. अगले आधे घंटे में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, करंट मार्केट सिचुएशन as well as few stocks which matters to the Nifty, that we will be discussing a lot here. And the last 15 minutes I kept for your question and answer, right? तो आपके जो भी प्रश्न है, जो भी सवाल है, आपका कोई स्टॉक है, आपकी कोई क्वेरी है, please hold all your questions and I'll take your questions in the last 15 minutes. So are you all ready? Yes, are you all ready? Just type BIO in the chat box. BIO is bring it on, right? Welcome Shani, Joy, Rajesh, Antesh, Kamal, Dev, Basant, Rajiv, Rajesh, Shubhu, Sajal, yeah. We have Paramjeet, Antesh, Pradeep Kumar. Welcome all of you. Welcome to the live session, right? And it's an honor, it's a pleasure to have you all here. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you. So let's get started with the analysis. Let's have a look at the overall structure of the Nifty first, right? This is our Nifty. और अगर हम निफ्टी का ओवरऑल फॉर्मेशन देखें, like what we did is we analyzed Nifty for last 5 years data. पिछले 5 साल का हमने नवंबर और दिसंबर का डेटा निकाला, and what we found is अगर बाजारें ट्रेंडिंग रही है थ्रू आउट द ईयर, तो नवंबर दिसंबर में वी सॉ अ साइडवेज मूव, राइट? और अगर बाजारों में मूव नहीं आई है, देन नवंबर दिसंबर आर द मंथ्स जब बाजार में मूव आई है, ट्रेंड आया है. जहां तक 2022 की बात है, 2022 में, राइट, November and December is expected to remain sideways, right? ये महीना ऐसा था, ये वर्ष ऐसा था कि हमने 2021 में रैली देखी. 2021 की रैली अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हुई. अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 तक हमने साइडवेज मार्केट देखा. वो साइडवेज मार्केट जुलाई मिड के बाद फिर से ऊपर आना शुरू हुआ, and we saw this up move till October again 2022. Now November and December are again expected to remain sideways in a range and in a band, right? तो इस तरीके से आपको इन 2 महीनों को प्लान करना पड़ेगा. बट द गुड न्यूज इज दैट यू कैन मेक मनी इवन इन अ साइडवेज मार्केट. ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट्स वर ऑलवेज फैसिनेटिंग, बट अ ट्रेडर इज अ ट्रेडर हु नोज हाउ टू मेक मनी in the trending market also and in the sideways market as well. तो ट्रेडर को दोनों बाजारों को प्ले करना आना चाहिए. जब भी आपको पता चले कि कोई भी बाजार साइडवेज है, the first important thing you need to do, you need to have is that you need to figure out the boundaries. Okay, fine. If Nifty is sideways, that's good, but we need to figure out the boundaries, the upper boundary of the sideways move as well as the lower boundary of the entire sideways move, right? So let's go to the monthly chart and you see ये जुलाई का महीना था. From July we made a bottom of 511 और वहां से we went all the way till 18,442. 18,604, 18,604 is our all-time high so far, right? This is, let's write it here, this is all-time high here, right? And we are again heading or reaching towards the upper all-time high zone,
राइट हमने देखा था एक ये ट्रेंड लाइन बड़ी फेमस थी उस समय, and we saw the price respecting this trend line. A lot of price activity happened here. फिर हम नीचे आए, नीचे आने के बाद हमने देखा कि हमने जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज था, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के जोन से हमने यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया एंड वी वेंट ऑल द वे अप बैक टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग ऐसा समझते हैं कि नवंबर दिसंबर, आई मीन टुडे इज 23rd November already, right? We have only 5 weeks almost to this year. How many of you think really कि हम इन 5 हफ्तों में 2022 के एक नया हाई देख सकते हैं? Just type me in the chat box if you really feel so. अगर आपको लगता है कि yes you can see a new high, just type me. If you think अच्छा नया हाई नहीं लग सकता, just type I don't in the chat box. Just type I don't in the chat box. Yes. So guys, yes, if you are liking the session, please hit the like button. Yeah? Please do that. Yes, so I don't think what I am expecting that we are going sideways in this range of the all-time high. Okay. The another way to look at it is, let's understand this. Every time we came across the all-time high, we just fallen. If you see here, if I draw this zone as a resistance zone, let me give it a color for a biasness. If this is a resistance zone, if I go to the weekly chart and see, this probably could be a good resistance zone, right? अगर इस resistance zone में हम देखें, first time when we came across this zone, we fallen badly. Next time again, price tried up, but it fallen. Again, we went up here and we are seeing some sort of profit booking into this zone. So now the question here is कि क्या हम इस zone से सीधा नीचे गिरेंगे back towards 17,000, या फिर the second possibility here is that we can consolidate around 18,000 to 18,400 band. 18,000 से लेके 18,400 की ये जो band है, इसमें हम sideways हो जाएंगे, and with a new news or with a new thrust or with a new news, you can say, we can start moving up, because to make a new high, it really needs a serious news, right? कुछ ऐसा पॉजिटिव चाहिए बाजार को जो बाजार ने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया है. If we look at the global situation, right, India is one of the fastest growing economy now. Our markets are growing rapidly. But the thing is that here at this point of time, the way market is sideways, I think December is going to remain sideways in this zone. How many of you agree with me on this? Just type I in the chat box. 80% chances है कि हम December में, I mean from today till December 31st, we are going to remain sideways. Only 20% chances are there that we can break through it and will go further up, right? So there is a 80-20 rule of probability which always works, and as per that rule, अगर 80% chances है कि हम 18,000 से 18,400, 500, 600 के range में रहेंगे December 31st तक, and we will see a new high in the market in 2023. Does it make sense to all of you? Just type makes sense in the chat box. Does it make sense to all of you? Yes, just type makes sense in the chat box, right? Yes, so यहाँ पे this is the kind of consolidation. Now let's understand the recent price action. This was the top. फिर let me just encircle these areas. So I'll give it the red color. This was one top जहां से बाजार नीचे गिरा. This was the second top जहां से बाजार नीचे गिरा, and third time it crossed it up. So what exactly this area is जहां से बाजार बार बार resistance face कर रही है, वो कौन सी area, कौन सा range है?
And if you just put a cursor over here, this is 18,000 zone. So let me put a line here, and this should be of a blue color, and I'll give it a name that this was the psychological level of 18,000, right? ये जो है 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था. यहाँ पे प्राइस एक बार आई. This is the first time when it came here and it fallen, right? Can you all see this? So first time when it came here, it fallen. Again, it went up to the same zone of 18,000 and it fallen. Then it taken support from the 200. This is 200 and it went up. And this time it crossed 18,000, testing, retesting, and it went up here. तो क्या आप सभी को प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है? That earlier price had faced a resistance of 18,000, right? Yes. और अभी प्राइस ने 18,000 का जो जोन है, it is taking support of the same 18,000 zone and moving up. Not moving up, but it is sideways in this support above 18,000, you can see. देखिए, suppose you are on living on the second floor, and I am on the first floor. फर्स्ट फ्लोर वाले के लिए जो छत है वो सेकंड फ्लोर वालों के लिए फर्श है, राइट? इट इज अ फ्लोर फॉर द सेकंड पीपल हु लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, एंड फॉर मी इट्स अ रूफ. ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल है. मान लीजिए 18,000 इज अ रेजिस्टेंस लेवल. अभी वो प्राइस के लिए छत थी. प्राइस ने जब इसको ब्रेक करके इसके ऊपर रहने लगी, इसके ऊपर सस्टेन करने लगी, अब ये 18,000 has became a support for the price. जब इसके ऊपर चली गई प्राइस, it is now you can say this is like a floor for the price, right? This is how market works. This is how market works. तो हमें क्या करना है? देखिए, एक ट्रेडर को प्रॉफिट कैसे बनाना? Like some of you are commenting, okay, it can fall, it can go up. If you want to make money from the market, be a reactive trader. Be a reactive trader. All of you please type reactive in the chat box. हम ट्रेडर्स हैं, हमें प्रॉफिट और लॉस उस चीज का होता है जो हम ट्रेड करते हैं. सपोज why we are in the market, why we all are in the market, why we all are traders, why you are in the market, what is your reason? Just to make money. Now as a trader हमें प्रॉफिट तब मिलेगा, हमें पैसा तब मिलेगा जब हम सही ट्रेड करेंगे, राइट? अगर हमको इस चीज का पैसा नहीं मिलता कि हम ये सोचे कि बाजार यहां जा सकती है या बाजार वहां जा सकती है. भविष्यवाणी करने का पैसा एस्ट्रोलॉजर्स को मिलता है, ट्रेडर्स को नहीं. सो एज अ ट्रेडर योर प्राइमरी जॉब इज to react on what is happening in the market instead of predicting that this can happen or that can happen. That really doesn't matter at all. आप सभी को जरूरत है कि you just need to unwire your brain and prepare yourself for a professional trading. How many of you want to become a professional trader? Just type I in the chat box. Just do that. तो यहाँ पे if I know okay market is sideways, the first way to trade any sideways market is that you figure out the boundaries. अगर बाजार sideways है तो हमें पहले ये पता करना है कि हमारी अपर बाउंड्री क्या है sideways market की और लोअर बाउंड्री क्या है. Now as we all know that 18,000 is the lower boundary and 18,450 is the upper boundary. Whenever price drops back to 18,000, 18,100 zone, I'll draw a zone here. Yes. So my job is whenever price comes back to the lower boundary, I need to perform a buy. जब भी price upper boundary में जाती है, I need to look for a sell setup and need to sell there. So I need to be a reactive trader
not a predictive trader. 99% of the traders are predictive trader. Only 1% of them are reactive traders. So we really need to shift ourselves to be able to react on what is happening in the market. Are you all getting me? Just type with you in the chat box. If you agree with me, just type with you in the chat box. तो अभी अगर हम प्राइस फॉर्मेशंस देखें, प्राइस का सेटअप देखें चार्ट पे, so this is where market is sideways. Now let's go to the smaller time frame. This is a 60-minute chart. This is my Fyers trading platform, trade.fyers.in. It has the same interface. Fyers में का जो web interface, it is same as trading view. ट्रेडिंग व्यू में यू नीड टू टेक द प्रो अकाउंट. यहाँ पे आप सेम चीजें फ्री में यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई यूज फायर्स एंड आई रिकमेंड यू ऑल टू यूज द सेम. एंड ऑल्सो यू हैव द 30-day चैलेंज. तो अगर आप 30-day चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल योर ब्रोकरेज विल बी रिफंडेड इफ यू विन द 30-day चैलेंज. तो जिनके पास भी फायर्स का अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है. क्लिक ऑन द लिंक एंड गेट योर अकाउंट्स ओपन. इट इज एब्सोल्युटली फ्री. Coming back to this is psychological level of 18,000. Can all of you see this? How many times price has taken support from here? ये पहली बार आई, ये दूसरी बार आई, and then it went up. Now this time, right, let me just encircle these areas. This was the first time. Give me a second. This was the first time here, right? This was the second time here when it came and went up. Now this time it went up from here. And this also is a zone of previous top. तो अभी क्या है? 18,000 to 18,000, I would say 150. Right? This is 130, 150 is the zone. If I make it a 150 for the ease of remembrance, 18,000 से लेके 18,150, इट मीन्स ये जो 150 पॉइंट की बैंड है, ये वो बैंड है जहां पे यू कैन लुक टू बाय द निफ्टी. until unless it breaks and comes below this, जब तक प्राइस इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं आ जाती 18,000 के, मतलब जब तक प्राइस ये प्रूफ ना कर दे कि 18,000 पे अब वो सस्टेन नहीं कर रही है, यस, तब तक आपको 18,000 को एज अ सपोर्ट ट्रीट करना है. देखिए, एज अ ट्रेडर वी नीड टू गो विद द फ्लो, राइट? अगर बाजार इज रेस्पेक्टिंग 18,000, लेट अस आल्सो रेस्पेक्ट 18,000. अगर बाजार 18,000 को रिस्पेक्ट नहीं करती है और बाय द वे इट कम्स डाउन बिलो एंड ब्रेक्स इट, देन वी विल गो शॉर्ट. हमारा काम बाजार को फॉलो करना है. वी नीड टू फॉलो द मार्केट टू मेक मनी. वी नीड टू बी अ रिएक्टिव ट्रेडर टू मेक मनी. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. So guys, if you are liking the session, please hit a like button. तो यहाँ पे this is from where the buying has come in the market, right? Can you all see this? This is where price found the support and it started moving up. Now this time it came till here today, and it is just consolidating here. So this is your lower boundary and the upper boundary is somewhere here. So I would give it a name. 18,450 is the zone. I would say this is the upper boundary of the sideways move. Now I believe, मेरा मानना है कि price has taken support here although, but it should come down back to 18,000, 18,050. This is so. So I believe कि बाजार यहाँ तक आता है तो 18,000 के आसपास. This is first time, this is second time, and this would be the third time जब बाजार यहाँ पे आएगी. और जब बाजार इस जोन में 18,000 में इस बार आएगी, तब तक हमारा ये जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, as you all can see here, this will also move up towards this.
तो अब अगर बाजार 18,000 के लेवल पे आती है तो इट विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एवर. It will have the strongest support ever, right? तो यहाँ पे अगर बाजार अब 18,000 पे आएगी तो आई थिंक वी कैन सी द फास्टेस्ट मूव कमिंग इन from 18,000 back towards 18,450 or maybe higher. So what is important as a trader? As a trader, बतौर trader, the most important thing is that you wait for the right opportunity, right? Wait for the 18,000, 18,050 to come. और जब प्राइस इस जोन में आएगी देन यू डोंट डाउट. अदरवाइज पता चले यहाँ पे आए तब आप डाउट करना शुरू कर दें, न्यूज देखना चालू कर दें और टीवी पे आएगी अब 18,000 टूटेगा, 17,500 आएगा, 600 आएगा और आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाए एंड यू आर नॉट एबल टू पुल द ट्रिगर. That should not be the case, right? If you have planned a trade, if you have managed your risk, follow your risk management system and buy at the right time or enter into a trade at the right time at least. So is the Nifty clear to all of you? Just type super clear in the chat box. As far as intraday is concerned, we had an initial move here. एक हमको initial move मिली बाजार में. And after this initial move, we are sideways. So if it continues to trade below 290 or 300, we can again see a fall in the second half of the day. But if we cross it above, we can again go sideways in this range throughout the day. Right? So let's see what happens. Let's see what happens. But as per me, मेरे हिसाब से, we are making a red candle and this should remain red throughout the day. So far I'm mild bearish on the Nifty. I'm mild bearish on the Nifty. Right? Just type super clear in the chat box. Yeah. Now let's go to the Bank Nifty. This is Bank Nifty. Now Bank Nifty, every day it is hitting a new all-time high, right? If अगर आप monthly chart पे देखें Bank Nifty को, this is the monthly chart of the Bank Nifty, right? Monthly chart पे अगर देखें, so you see here, this was the previous all-time high. Previous all-time high हमारा Bank Nifty में था at 41,829. यहाँ पे हमने एक बार कोशिश की, we failed. Next time we again tried and this time it was a successful attempt. So अगर हम देखें, right, so from last 3 weeks including this week so far, पिछले 3 हफ्तों से Bank Nifty has broken the previous all-time high and is moving up. तो क्लियरली अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस जो है वो हमको दिख रही है. एंड यू नो नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि अब बैंक निफ्टी यहाँ पे will Bank Nifty take a turn and come down back to the same zone? क्योंकि क्या होता है, एक लेवल ब्रेक हुआ है, right? Now the important question is whether this is going to sustain or this is not going to sustain. फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले 3 हफ्तों से बैंक निफ्टी जो है वो इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है. But if you look at the price action, if you look at the price behavior, particularly in this zone, let me just mark this zone here. अगर इस जोन में, इस रेंज में आप बैंक निफ्टी को देखें तो इट इज मेकिंग स्मॉल, दिस इज नोन एज नैरो रेंज कैंडल्स, चाहे ग्रीन कलर हो या रेड कलर. जब ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग टिप जो हम आप सभी को देना चाहेंगे, no matter is whether the color of the candle is red or green, अगर small ranged candle बाजार में बनती है, right, तो color of the candle doesn't matter. यहाँ पे बैंक निफ्टी में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, and I'm sure if I'll apply the volumes, for that I need to go for the futures.
राइट। अगर इस एरिया में, इस जोन में अगर हम वॉल्यूम अप्लाई करें तो दैट शुड बी ड्राइड अप। तो वॉल्यूम्स यहाँ पे लो होने चाहिए, एंड यू कैन सी इज द वॉल्यूम डिक्लाइन while bank nifty is moving up, or is the volume rising? Just type in the chat box. इस जोन में, इस रेंज में जब बैंक निफ्टी ने लेवल ब्रेक करके और ऑल टाइम हाई की ऊपर सस्टेन कर रही है, तो इस समय वॉल्यूम गिर रहा है या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. We can clearly see that above the highs volume is shrinking, volume has dried up. तो इसका क्या अर्थ हुआ? What does it mean then? Yes, what does it mean? So this happens when market is trying to form a base here. मेरे हिसाब से market is trying to form a base here in the 1000 to 900 points range. 41,800 on the lower side, which is the previous all-time high, and maybe it could be a 42,800 on the upside. Now, no matter बैंक निफ्टी इस रेंज में, इस दायरे में कितना समय बिताती है, लेकिन once because final it needs to either break this base, ठीक है, ये जो base है यहाँ पे. Now बैंक निफ्टी, let me just add the index cash, ठीक है. अब बैंक निफ्टी is sideways with a low volume here, right? We can see this difference. Now it needs to break this band, this consolidation with a big candle and high volumes. ये जो रेंज है, ये जो दायरा है, बैंक निफ्टी को जरूरत है कि वो इस रेंज को, इस दायरे को बड़ी कैंडल, आई मीन अ बिग डे एंड बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे. All of you please type big candle and big volume in the chat box. Yes. So that will decide the direction to this. Now, if it, the first case is agar bank nifty makes a big candle on the upside, it means it is going to move further up. But somehow agar ye nahi hota hai और बैंक निफ्टी किसी भी कारण से, right, for any reason, if it comes down and makes a red candle and turns around and falls below, this could lead it for a further correction. So we need to wait and watch. We need to wait and watch here. Yes, we need to give it a time. We need to wait and watch it. Is this clear to all of you? Just type super clear in the chat box. Is this clear to all of you? Just type super clear in the chat box. So all of you, please type big candle and big volume in the chat box. Big, yes. Understood. Mangesh, Pradeep, Shubhu. Yes, we have Dr. Girish, Paramjeet Singh, Boga Vishwanath. Yes, Madhu, Kamal, Yatru, Shivam. Yes, chaliye. So this is how it is. Now let's look at the Nifty top 10 constituents. So these are the Nifty top 10 constituents, and let's see, let's talk about them. Reliance is sideways. Again, it is back to the daily 200. So Reliance में sideways activity चालू रहनी चाहिए. For the day it is bearish. HDFC Bank has broken out. ये big candle थी HDFC Bank में और उसके बाद ये गिर रही है. मेरे हिसाब से 1575 1580 की इस जोन में it will be a good buy again. So we'll see that, but let it correct a bit so that अभी जो ये मूविंग एवरेजेस हैं जिनके बीच का फासला ये है, ये थोड़ा सा कम हो जाए, एंड वंस दिस आल्सो कम्स हियर विद अ बाइंग इवेंट हियर, वी विल लुक टू बाय इट. सो वेट एंड वॉच इन HDFC Bank. ICICI Bank is towards the all-time high.
इन्फोसिस हैज अ गुड बाय। मेरे हिसाब से आईटी कंपनीज का जो बुरा समय था, जो डाउन टाइम था, वो कंप्लीट हो गया है। आने वाले समय में आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, राइट। आने वाले में बैंक निफ्टी, सॉरी, आईटी कंपनीज अच्छा कर सकती हैं। और इन्फोसिस का जो चार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। इट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम अ गुड जोन। वीकली चार्ट्स पे देखे तो बहुत अच्छा एक टॉप बॉटम बनाया है, उसकी रीटेस्टिंग की और फिर ऊपर जा रहा है। एंड दिस इज द डेली 200। अगर इस डेली 200 को इन्फोसिस सरवाइव करती है तो विल सी इट गोइंग बैक टुवर्ड्स 1700 और मे बी 1800 इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। तो जिन्होंने भी पोर्टफोलियो में इन्फोसिस रखा है, आईटी शेयर्स रखे हैं, प्लीज कीप देम एज इट इज। दे आर गोइंग टू शाइन अगेन, ठीक है। एचडीएफसी लिमिटेड में बड़ी कैंडल बनी थी, अगेन थोड़ा करेक्शन हो रहा है। फिर से इस जोन में 2575 2585 के आसपास हम एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड में री एंट्री करने के लिए देख सकते हैं। टीसीएस इज फेसिंग रेजिस्टेंस हियर। फर्दर मूव आने के लिए वी नीड टीसीएस टू गो पास्ट 3400 एटलीस्ट। तो इस बार जब टीसीएस 3400 के लेवल्स को पार करेगी, 3400 के स्तरों को तोड़ेगी, देन वी कैन सी अ मूव इन टीसीएस बैक टुवर्ड्स 3600, बट इट नीड्स टू ब्रेक द 3400 फर्स्ट। तो 3400 जो है वो लाइन इन द सैंड है। एक बार 3400 ब्रेक होगा, देन वी विल सी 3600 also 3 months 6 months down the line into TCS। So just जिनके पास भी आईटी शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, आई एम रिकमेंडिंग टू जस्ट होल्ड ऑन इट। आईटीसी में हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं कुछ समय से, एंड इट कैन कम डाउन टू 330 330 325। ये जो प्रीवियस लोज थे, यहाँ तक आईटीसी वापस आ सकती है और इन जोन्स में, इन लेवल्स पे आईटीसी में वापस बाइंग बनेगी। लेट इट करेक्ट फर्स्ट, डोंट बाय इट नाउ, लेट इट करेक्ट। So no for the ITC. Kotak Mahindra is all sideways to up, so no for this. L&T is also sideways. Can you see this congestion area? So अगर हमें खरीदना है तो we need a clear trend in the stock, right? जब भी कंजेशन है, जब भी कंजेस्टेड एरिया है, वी विल नॉट परफॉर्म एनी ट्रेड इन दिस बैंड, राइट। सो लेट इट बी देयर, है ना, विल सी एंड वेट फॉर अ ट्रेंड। Axis Bank, yes, it moved up, but leave it for the moment. And State Bank of India moved up today, but this is also sideways. तो 590 से 95 का ये जो जोन है, this is a good area to get long in State Bank। 605 610 के लेवल्स पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक ये जोन बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें स्टेट बैंक में लोअर टेरिटरी पे आप खरीद सकते हैं और अपर टेरिटरी पे बेच के चल सकते हैं। ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज साइडवेज। कैन यू सी दिस फ्लैटनेस इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? This is the flat zone. So overall, if you see, this is sideways only. So this is all about the 10 stocks of the Nifty 50. So guys, let's take your questions now. Yes, everybody, one person, one question only, and I will try to take as much as possible. So please type your question in the chat box and I'll take it that. If you are liking the session, please hit the like button. Yeah, thank you so much for all your likes. Joy and Urvi has asked about Britannia. So let's look at the Britannia. Yes, let's look at Britannia. Britannia Industries, this is an FMCG stock, FMCG stock है, और एक बड़ी मूव आई थी बैक टूवर्ड्स द ऑल टाइम हाई एंड देन इट इज कंसोलिडेटिंग। अब ब्रिटानिया में आई थिंक इट्स अ होल्ड केस, ठीक है। इफ यू आर ऑलरेडी लॉन्ग इन ब्रिटानिया, जस्ट होल्ड द पोजीशंस, बिकॉज अभी तक ब्रिटानिया गिरना शुरू नहीं हुई है। So this is, I think it corrected only about a 50%. So 40-20 is a good stop loss with which you can continue to hold it. Hold the cash long.
Your next question is HCL Tech. Okay, let's look at HCL Tech. Let's look at HCL Tech. All the tech stocks are are again coming up. So HCL Tech is bullish, clearly bullish. So yes. Next question, please. Mahindra and Mahindra, Mr. Hanumant Rao. Let's look at Mahindra and Mahindra. M&M. Mahindra and Mahindra is falling. So I can see it is falling and it still has to fall. So मेरे हिसाब से my view is bearish on M&M. It can still fall a bit. So it can still fall. I mean, it reached into this support zone, but there is no buying, at least at the current price. So yes, even if you cannot sell it, that's okay, but you cannot buy it. Wait for it to complete the correction. तो जो correction है M&M में वो अभी complete नहीं हुई है. I would say you wait in M&M. अजीत काले कैम्स में accumulation करना चाहिए क्या? Let's look at CAMS. Sorry. So this is computer age. Accumulation करना चाहिए क्या? अजीत काले. Okay. अजीत always understand कि कोई भी ट्रेडर है कभी भी प्री अटेम्प्ट करने से प्रॉफिट नहीं बनाया किसी भी ट्रेडर ने. What is a no-brainer into computer ages is that it's falling. Yes or no? Computer ages is falling, गिर रहा है, let it fall. Don't think that okay, it should find support from here, or it should do this, it should do that. It will not do what you are thinking. Once it has done the reversal, then only you think about buying. जब तक reversal नहीं आएगा CAMS में, don't even look at it. Don't even look at it. Are you getting me, Ajit? Yes. Yes. Now the next question is metal sector. Mr. Vishwanath, let's look at CNX metal. So metal sector में अगर हम देखें, this is CNX metal. CNX metal में यहाँ पे अच्छा base बना था and it again went up. I think this index is sideways. If you look at the Tata Steel, let's look at Tata Steel. You see it is again sideways. लेकिन आने वाले दिनों में टाटा स्टील, वेदांता, इन सभी शेयर्स में तेजी आ सकती है क्योंकि एक मीन रिवर्जन और जो टाइम करेक्शन है वो इनमें आ चुकी है. So wait for the breakout. Yes, wait for the breakout. That doesn't mean कि अभी लेना है, but you see, I can see a nice clear consolidation here. So we can see upside more in the metal stocks, but wait for that to get started. Yes, not at the moment. Sajal is asking about Zeal. Let's look at Zeal. Yes, Z Entertainment. Zeal, this is Zeal, and this is moving up. I think it can further go up. Zeal एक बार 260 और 265 के जोन तक जा सकता है. अब ये अगर लौट के इस जोन को तोड़ेगा, 245 के नीचे ही बेरिश है. अगर ये 245 के नीचे नहीं जाता तो आने वाले समय में और तेजी देखी जा सकती है. Nirmal is asking about IndusInd Bank. Let's look at IndusInd. So this is IndusInd Bank. It is what a classical sideways market which is trying to break out. तो मेरा मानना है कि अगर 1120 1115 के नीचे नहीं जाता IndusInd बैंक तो एक हमको वापस अपस्विंग मिल सकती है 1217 1220 के आसपास, 1230 तक. Okay, Tata Chemical, Shubhu is asking about Tata Chemical. Tata Chemical is falling and this is not a trustable setup.
तो यहाँ पे लग रहा है कि 200 डेली 200 पे टाटा केमिकल सपोर्ट ले रही है, बट द पैटर्न, द प्राइस एक्शन सेटअप इज नॉट कंप्लीट हियर, सो वेट फॉर दिस. थोड़ा यहाँ टेस्टिंग हुई, अभी रीटेस्टिंग होगी, एक अच्छी बड़ी ग्रीन कलर कैंडल बनेगी, तब यहाँ पे खरीदेंगे. अभी वेट करें. Bharat Singh is asking about BSCE. So BSC is traded in NSC. So let's look at it. So it is falling. It's a no-brainer, Bharat. जो भी चीज गिरती है, कभी भी नेवर बाय अ फॉलिंग नाइफ इन द मार्केट. एक बात याद रखिए, खरीदना है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक खरीदिए, बेचना है तो वीक स्टॉक बेचिए. It is always said in the Dalal Street that buy the strongest and sell the weakest. गिरते हुई चीज को, अगर एक छुरी गिर रही है, आप हाथ लगाओगे, हाथ ही कटेगा, छुरी थोड़ी रुकेगी. So never try to catch the falling knife. Which 3MA? For this you need to go for the courses, Rajesh. Thank you, Rajendra. Thank you, Nirmal. Yes, Yogi and JK paper, Rajendra Kulkarni. So Asterdom, let's look at Aster. So I'm taking the last two. Yes, let's look at Aster DM. This can again fall further. गिरावट आ रही थी, यहाँ पे थोड़ा रुका है, थोड़ा सा हॉल्ट है, right? This can again fall back to this. तो कोई दम नहीं है फिलहाल, ये यहाँ तक गिर सकता है, right? And last is JK. JK paper is where I am also bullish. Let's look at JK. JK paper. Yes, and this is JK papers, and it can still go up. So मेरे हिसाब से JK papers अभी और okay, we are in JK cement. You asked about JK paper, right? JK paper is consolidating. इस जोन में कंसोलिडेट हो रहा है, तो फिलहाल बाइंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि इट इज जस्ट अ बिग स्विंग हैज कम. जब ऐसे फॉर्मेशंस होते हैं चार्ट पे कि बड़ी स्विंग आती है और धीरे धीरे ऊपर जाता है, दिस इज नॉट ट्रस्टेबल. आई थिंक इट कैन अगेन फाइंड साइडवेज एक्टिविटी इन दिस जोन. तो अभी ब्रेकआउट जैसे सेटअप नहीं है जेके पेपर में. इट इज नॉट बेरिश ऑल्सो, बट इट इज ऑल साइडवेज. Yes, okay guys, all right. Thank you so much for being here. Thank you so much for joining the session. And yes, it's an honor, it's a pleasure to have you all here on board. Thank you so much from the bottom of my heart. Thank you. Bye-bye and take care. Thank you.